then this relationship among alpha, beta and gamma for solids only. ठीक है, देखिए हम अब रिलेशनशिप अमंग अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपर एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. बट दिस रिलेशनशिप वी ओनली यूज फॉर सॉलिड्स. लिक्विड के लिए कभी कदार कोई कोई बुक में यूज कर लेते हैं, बट आपको अल्फा का वैल्यू चेक करना होगा वहां. यदि अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा तभी आप ये लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, अब आप पूछेंगे क्यों. सो द आंसर विल लाई इन द डेरिवेशन. डेरिवेशन में इसका आंसर है व्हाई वी कांट यूज इट फॉर लिक्विड. राइट, सो लेट मी डिराइव इट एंड देन यू विल रियलाइज कि क्यों यूज करते हैं. आई विल डिराइव इट यूजिंग अ वेरी सिंपल सिचुएशन. सपोज हमारे पास एक क्यूब है. लेट्स से लेंथ इज L, width is L, height is L. So when I'll heat it, its length L dash will become L1 plus alpha delta T. Its area will become A1 plus beta delta T. And its volume will become V dash V1 plus gamma delta T. Where area A is L square, A dash will be L dash whole square. V will be L cube and V dash L dash cube. Understood, Gurashish? Yes, sir. So what मैं जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एरिया वाले में मैं क्या कर सकता हूँ. I can write L dash square is equal to L square 1 plus beta delta T, or I can write L alpha delta T whole square is L square 1 plus beta delta T. So this gets cancelled out. I have 1 plus alpha whole square 1 plus beta delta T. So if alpha is very small, then alpha delta T will be much smaller than 1. So I can use binomial expansion. Yes. Binomial approximation expansion का use करके I can write 1 plus 2 times alpha delta T is 1 plus beta delta T. So I can say 2 alpha is equal to beta. For solid it is very small. लेकिन लिक्विड के लिए इतना स्मॉल नहीं होता है. राइट, फाइन. और गैसेस के लिए तो डेफिनेटली नहीं होता है. तो आपको अल्फा का वैल्यू देखना है. यदि वो जो आपको लग रहा है कि 10 to the power -5 दिया हुआ है किसी लिक्विड के लिए तो डेफिनेटली यू कैन यूज इट. बट 10 to the power 1, 10 to the power -2 दिया हुआ तो यू कांट यूज इट. क्योंकि यदि 10 to the power -2 दिया हुआ और यदि 20 डिग्री भी टेम्परेचर है तो इट बिकम 0.2, व्हिच इज नॉट लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब हुआ कि 1% to 3% से कम होना चाहिए. 1 to 2%. That is less than 1. Understood this? Yes, sir. Fine. So we got 2 alpha is equal to beta. इसी तरह से हम कह सकते हैं V dash is equal to V1 plus gamma delta T. So I can write this as L dash cube is equal to L cube 1 plus gamma delta T. I can write this as L 1 plus alpha delta T whole cube 1 plus gamma delta T. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास gamma is equal to 3 alpha आ जाएगा. So I can say alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by. समझ में आया ये रिलेशनशिप? हाँ, ठीक है. तो बेसिकली कभी कदार क्या होता है ना, क्वेश्चन में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे होंगे और क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं होगा गामा. आपको आउटराइटली समझ जाना है कि ओके दिस इज सॉलिड, सो आई कैन मेक इट 3 times alpha and this solve.